एक कन्फ्यूजन बिल्ड होता है जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं। सेक्शन द कन्फ्यूजन एक्चुअली एग्जिस्ट्स बिटवीन सेक्शन 114 जो उसकी इलस्ट्रेशन बी है और सेक्शन 133। जब हमें दो प्रोविजंस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दे आर कंट्रारी टू ईच अदर। तो आई विल ट्राई टू डू अवे विद द कन्फ्यूजन। पहले हम जो दो प्रोविजंस हैं उनकी प्लेन रीडिंग लेते हैं। सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी ये ले डाउन करती है दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. Illustration B section 114 के पढ़ने के बाद it appears that जो accomplice है उसकी testimony, उसकी evidence का कोई वैल्यू नहीं है। मगर जब हम सेक्शन 133 पढ़ते हैं उसकी रीडिंग जो प्लेन रीडिंग है that an accomplice shall be a competent witness against a person and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. 133 के पढ़ने के बाद ये लगता है कि accomplice तो competent witness है, तो एक कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करता है सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी और सेक्शन 133 में। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक अकम्पलिस अनट्रस्टवर्दी है, उसकी एविडेंस का कोई वे नहीं है, उसका वज़न नहीं है, तो रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे। जो रैशनल है इसके पीछे वो ये है कि जो अकम्पलिस है वो पार्टिसिपेटर होता है क्राइम में, is a partner to crime and consequently an immoral person and therefore is likely to disregard the sanctity of oath. जो एक दूसरा रीज़न है वो ये है कि accomplice quite likely होता है कि that he will state falsely in order to shift his fault from his shoulders and he will certainly make an endeavor that he will earn a favor in the form of pardon from the prosecution. ये दो रीजंस हैं जिनके बिना पर हम ये कहते हैं कि accomplice अनट्रस्टवर्दी है, उसकी एविडेंस का ज़्यादा कोई वे नहीं होता। दोनों प्रोविजंस हमने पढ़ लिए, कुछ हमारी समझ में भी आया कि दोनों प्रोविजंस क्या ले डाउन करते हैं और ये भी पता चला हमें कि दे समवट अपेयर टू बी कंट्राडिक्टरी। मगर जो बेस्ट अप्रोच है इन दो सेक्शंस को समझने का वो ये है कि दैट वी विल ट्राई टू सी a combined effect of section 114 and 133 although they seem to be contradictory. जो एक combined effect है दोनों provisions का है वो ये है कि दोनों provisions यानी section 133 and the illustration to section 114 इन दोनों को मिला के जो एक लुक हमारे सामने आता है, जो एक अप्रोच डेवलप होता है उसको सामने रखते हुए what appears that section 133 it seems to be the main provision and the illustration to section 114 seems to be a proviso to section 133, and what we can gather from the combined reading is that a conviction it can be based on the uncorroborated testimony of an accomplice, but as a rule of prudence it is unsafe to put a reliance on an uncorroborated testimony. The ambiguity has well been considered by Supreme Court, and there are a number of leading cases on the subject. The main principles that have been laid down by Supreme Court can be enumerated, and they are though conviction not illegal because it's
founded on uncorroborated testimony of the accomplice, but at the same time, the legislative intention is to invite the attention to the illustration laid down in section 114 with a view to emphasize that rule contained in section 114 and that of 133 are part of one and the same subject, and neither can be ignored in exercise of the judicial discretion except in cases that are very exceptional ones. Furthermore, the Supreme Court has made another observation in a leading case, CBI versus Ashok Kumar, that section 114, the illustration in fact to section 114 and section 133 of the Evidence Act provide for the same rule, that is, accomplice is a competent witness and his testimony can be relied upon, but depending upon the quality of the evidence. If the quality is good one, we can rely on the uncorroborated evidence of the accomplice. Otherwise, he is to be corroborated